हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इससे पहले एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर और बाकी सारे जितने भी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सारे के सारे नोट्स मैंने बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2017 में आया है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, a subordinate is answerable to many bosses. First, every superior considers his work important and wants the workers to give top priority to his assignment. First, the workers feel confused and are unable to decide about the priority of their work. ठीक है। दूसरा देखिए, lack of coordination. The appointment of several specialists creates problems of coordination, especially when the advice of more than one is needed in taking decisions. First, specialists try to give more importance to their work as compared to other areas. ठीक है, इससे पहले बता दो, अगर आपको सारे पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ में आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंस देयर इज नो यूनिट ऑफ कमांड कोमा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर slackness ऑफ वर्क। फर्स्ट, सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग ए वर्क एंड एवरीबडी ट्राइज टू ब्लेम अदर्स फॉर लो परफॉर्मेंस। उसके बाद देखिए, डिले इन टेकिंग डिसीजन। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पर्सन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लोज डाउन इट। फर्स्ट, द स्पीड ऑफ एक्शन टेंड्स टू बी हार्म्ड बाय द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी। First, much time is taken in consulting different specialists prior to decision making. उसके बाद देखिए, expensive. Multiplicity of experts increases overhead expenses of the organization. First, a number of specialists are appointed for managing various line of work. First, these persons being specialists, they demand much higher emoluments, मतलब basically ज़्यादा पैसे मांगते हैं। First, small units cannot afford to have functional organization. उसके बाद देखिए, ग्रुप राइवलरीज। द इमर्जेंस ऑफ वेरियस पर्सन्स ऑफ इक्वल स्टेटस इमर्जेस ग्रुप राइवलरीज अमंग एग्जीक्यूटिव्स। फर्स्ट, पर्सन्स कनेक्टेड विद डिफरेंट फील्ड्स ट्राई टू क्रिएट देयर ग्रुप्स and then starts among those groups. First, every group tries to dominate the other. हम बात करते हैं 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में एंड 2023 रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए अच्छी तरीके से। द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। आर नंबर 1, ग्रुप एक्टिविटीज। इन दिस स्ट्रक्चर सिमिलर एक्टिविटीज एंड पर्सन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड ग्रुप टुगेदर। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद देखिए, नंबर 2 है क्विक डिसीजन मेकिंग। ईच डिवीजन वर्क्स इंडिपेंडेंटली, डिसीजन मेकिंग इज क्विक। फर्स्ट, क्विक डिसीजंस में हेल्प्स इन टेकिंग टाइमली डिसीजंस व्हिच अल्टीमेटली हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा। उसके बाद देखिए, बेनिफिट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इन ईच डिवीजन हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब्स। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स इन रेजिंग आउटपुट ऑफ वर्कर्स। उसके बाद देखिए, नंबर 3, हेल्प्स इन एक्सपांशन। डिविजनल स्ट्रक्चर हेल्प्स टॉप मैनेजमेंट इन एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स। फर्स्ट, सिंस एक्टिविटीज विल रिमेन अंडर कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस, देयर विल बी नो फियर ऑफ मिसमैनेजमेंट और फेलियर्स। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर हेल्प्स इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फर्स्ट, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स टू बी परस्यूड इन फ्यूचर और द चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।